बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज जुमा 19 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग की। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि जुमा को इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि अमेरिका का कितना प्रेशर है इसराइल के ऊपर। अब गुज़िश्ता रात हमारी बात भी नहीं हुई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इजलास चल रहा था। ये इजलास अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का फ़लस्तीन की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर ये इजलास था, जिसके अंदर वोटिंग हुई। वोटिंग के रिजल्ट्स देख लें, उसके बाद बात करते हैं। This meeting is the admission of new members. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Israel to participate in this meeting. It is so decided. I propose that the Council invite the permanent observer of the Observer State of Palestine to the United Nations to participate in this meeting in accordance with the Provisional Rules of Procedure and the previous practice in this regard. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of Item 2 on its agenda. In a letter dated 2nd April 2024, addressed to the Secretary-General, the permanent observer of the Observer State of Palestine referred to the application of the State of Palestine for membership in the United Nations contained in document S/2011/592, dated 23rd September 2011. The requested that renewed consideration be given to that application by the Security Council. The letter has been issued as document S/2024/286. The report of the Committee on the Admissions of New Members concerning the application of the State of Palestine for admission to membership in the United Nations has been issued as document S/2024/313. Members of the Council have before them document S/2024/312, the text of a draft resolution submitted by Algeria. The Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. I shall now put the draft resolution to the vote. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/312 please raise their hand? Recorded 12, right? Okay. Those against? Thank you. Abstentions? The draft resolution has not been adopted owing to, the result of the vote is as follows. 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. मनाज़र आपने देख लिया, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर जो वोटिंग हुई, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, तमाम के तमाम कंट्रीज़ ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया। 2 कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने अब्सटेन किया, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया ने अब्सटेन किया, और एक हाथ बुलंद हुआ इस करारदाद के ख़िलाफ़। एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि अमेरिका हाथ बुलंद करके पूरी दुनिया को एक मरतबा फिर से बताएगा कि अमेरिका ही सबब है ये जो कुछ मशरिक़ वुस्ता के अंदर हो रहा है, या फिर जो कुछ गज़ा के अंदर हो रहा है, ये अमेरिका की वजह से हो रहा है, जिसने पहले भी जो जंगबंदी की करारदादें हैं उनको 3-3 मरतबा अमेरिका ने हाथ बुलंद करके यहाँ पर वीटो किया, और आज इस करारदाद को वीटो किया जाना अमेरिका की बदनीयती का मुंह बोलता सबूत है। और अगर अब भी OIC कंट्रीज़ या फिर वो मुसलमान ममालिक जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं या फिर जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज रखे हुए हैं,
अगर अब भी वो इसराइल के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाते, मजम्मती करारदादों से आगे नहीं बढ़ते जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं, इस पर वीटो जो किया गया, इस पर मजम्मती अलामिये जारी किए जाने लगे हैं ओआईसी कंट्रीज़ की जानिब से। अब ओआईसी कंट्रीज़ को इन मजम्मती अलामियों से आगे बढ़कर फ़लस्तीन कॉज के लिए प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है। जिस तरह का खिताब किया गया इस वोटिंग के बाद फ़लस्तीन के नुमाइंदे की जानिब से, जो इमोशनल खिताब था, मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, वो खिताब ज़रूर सुनिएगा, सुनने से ताल्लुक़ रखता है। अमेरिका के नुमाइंदे ने क्या कहा वो खिताब भी मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। दोनों खिताब सुनकर आप खुद फैसला कीजिएगा कि हिस्ट्री की राइट साइड पर कौन खड़ा है और ओआईसी ममालिक को इस वक्त कहाँ पर मौजूद होने की ज़रूरत है। अब इस तरह की रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका और इसराइल की डील हो गई है, और डील ये है कि अमेरिका ने इसराइल को ये कहा कि एक तो मैं यहाँ पर वीटो करूँगा फ़लस्तीन की परमानेंट मेंबरशिप को, और दूसरा राफा में ऑपरेशन की इजाज़त मैं तुम्हें दूंगा, उसके बदले में तुमने ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स हैं ये मगरबी मीडिया और दज्जाली मीडिया का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। ईरान पर कोई सरप्राइज अटैक करने का इनका मंसूबा है, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं सहूनी वज़ीर आज़म की जानिब से, सहूनी वज़रा की जानिब से, तो ईरान पर तो ये हमला करेंगे और ईरान पर हमले से ये पीछे नहीं हटेंगे। ये जिस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि इनकी डील हो गई है और वीटो के बदले में या फिर राफा ऑपरेशन के बदले में इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान के पास कुछ रिपोर्ट्स पहुंची हैं कि इसराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता है। तो जवाब में ईरान की जानिब से ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा कि अगर इसराइल ऐसा करेगा तो इसराइल के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भी ईरान से कोई ढकी छुपी नहीं है। ईरान की जानिब से विद इन सेकेंड्स इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा दिया जाएगा। और इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि जो पहले हमले रिपोर्ट हुए ईरान के, उसमें ईरान कामयाब हुआ है इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने में। इसराइल की जो एयर बेस है उसको टारगेट करने में ईरान कामयाब हुआ है। तो इस खदशे के पेश नज़र अमेरिका की जानिब से इसराइल को मना किया गया है कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना। लेकिन ये रिपोर्ट्स, पहले भी मैंने आपको बताया कि इन रिपोर्ट्स पर बिलीव नहीं किया जा सकता। इसराइल ईरान पर हमला करेगा, लेकिन पास ओवर के त्यौहार के बाद। अब पास ओवर का त्यौहार मैं आपको बता दूं कि 22 अप्रैल को ये त्यौहार स्टार्ट हो रहा है इसराइल के अंदर, और इस त्यौहार के दौरान भी मस्जिदुल अक्सा की बेहुरमती जो कि हर साल की जाती है इनकी जानिब से, इस मर्तबा कुछ ख़ास हो गया ये त्यौहार, और कुछ ख़ास करने की कोशिश भी इन सहूनियों की जानिब से की जा सकती है। यानी कि अपने थर्ड टेम्पल वाले मंसूबे को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो त्यौहार है इसके दौरान कोई कार्रवाई भी इनकी जानिब से की जा सकती है। जिसके बाद इसराइली मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पास ओवर का त्यौहार गुजरने के बाद इसराइल की जानिब से ईरान के हवाले से जो रिटेलिएशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब पास ओवर का त्यौहार है क्या और इसमें ये किस तरह की रसूमात अदा करते हैं, एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो दे दूंगा, और इस वीडियो के एंड पर आपको फ़लस्तीनी नुमाइंदे का और अमरीकी नुमाइंदे का खिताब अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से, वो भी मिल जाएगा। ज़रूर सुनिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ इस वोटिंग और इस पर आने वाले रद्द अमल पर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। By all of your statements, those who voted in favor and even those who voted differently, of the passion that it contained in your commitment and understanding the pain and the moment of the Palestinian people. I salute you in the name of the Palestinian people and their leadership. بل أن شعبنا الفلسطيني كافة. Our Palestinian people, wherever they are, want life. They cling onto life, just like the other peoples on this planet.
The Palestinians are a people who aspire to freedom, to a dignified life, to a peaceful existence. The people of Palestine will not disappear. The people of Palestine will not be buried. The Palestinian people have never been unnecessary. You either do us justice or you do it justice. We love life, to live in freedom and dignity in our national homeland. We will not disappear. Either you deal with us with fairness and give us our rights, or give us our rights. Thank you very much. Thank you, Madam President. The United States has worked vigorously and with determination to support Palestinian statehood in the context of a comprehensive peace agreement that would permanently resolve the Israeli-Palestinian conflict. Since the attacks of October 7, President Biden has been clear that sustainable peace in the region can only be achieved through a two-state solution, with Israel's security guaranteed. There is no other path that guarantees Israel's security and future as a democratic Jewish state. There is no other path that guarantees Palestinians can live in peace and with dignity in a state of their own. And there is no other path that leads to regional integration between Israel and all its Arab neighbors, including Saudi Arabia. We also have long been clear that premature actions here in New York, even with the best intentions, will not achieve statehood for the Palestinian people. As members of the Security Council, we have a special responsibility to ensure that our actions further the cause of international peace and security and are consistent with the requirements of the UN Charter. As reflected in the report of the Admission Committee, there was not unanimity among committee members as to whether the applicant met the criteria for membership as set forth in Article 4 of the UN Charter. For example, there are unresolved questions as to whether the applicant meets the criteria to be considered a state. We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms to help establish the attributes of readiness for statehood, and note that Hamas, a terrorist organization, is currently exerting power and influence in Gaza, an integral part of the state envisioned in this resolution. For these reasons, the United States voted no on this Security Council resolution. Again, the United States continues to strongly support a two-state solution. This vote does not reflect opposition to Palestinian statehood, but instead is an acknowledgement that it will only come from direct negotiations between the parties. A central focus of U.S. policy prior to October 7, the October 7 Hamas terrorist attacks, was to promote normalization between Israel and its Arab neighbors and, as a critical element of a normalization package, generate tangible benefits and a political horizon for the Palestinian people. This was based on the U.S. judgment that normalization is the most viable pathway to make progress on what had been an intractable situation between the Israelis and the Palestinians. In the aftermath of October 7, conversations on potential normalization and a political horizon for the Palestinians that would lead to statehood and membership at the UN have continued. Hamas and its Iranian backers would probably prefer this effort not succeed, but we are determined to see it through. It remains the U.S. view that the most expeditious path towards statehood for the Palestinian people is through direct negotiations between Israel and the Palestinian Authority with the support of the United States and other partners. We believe this approach can tangibly advance Palestinian goals in a meaningful and enduring way. We also believe, in light of Iran's unprecedented and outrageous actions over the last week, that Israel's neighbors would stand to benefit greatly from normalization. The United States is committed to intensifying its engagement with the Palestinians and the rest of the region
not only to address the current crisis in Gaza, but to advance a political settlement that will create a path to Palestinian statehood and membership in the United Nations. The United States will continue to oppose unilateral measures that undermine the prospect of a two-state solution. This includes any actions that violate the principles that Secretary Blinken has emphasized for months, that Gaza cannot be a platform for terrorism. There should be no Israeli reoccupation of Gaza, and the size of Gaza's territory should not be reduced. As we have said before, we believe a two-state solution coupled with these elements is the best way to achieve a durable peace in the region, along with security for Israelis and Palestinians. Thank you, Madam President.